हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूक्लियोटाइड्स बायोलॉजी डिस्कस। आज हमें कंटिन्यू करमा सीपीटी 2025 रो लगी हमें स्टार्ट करथिला लास्ट टारगेट सीपीटी बोटनी फॉर द 2025 एंड आज हमें सेनु कंटिन्यू करमा। लास्ट क्लास रे किछटा में क्वेश्चन डिस्कशन करथिला रिगार्डिंग द वायरस। आज हमें किछि डिस्कशन करमा आउ किछि क्वेश्चन रिलेटेड टू वायरस एंड बैक्टीरिया एंड तार आगे आउथरे में कही रखमी target CPT botany for the 2025 has been started in the nucleotide application रे start ही सारी छे जेन माने एते बेल तक डाउनलोड नाइ करबार तले या फिर जेन माने एते बेल तक एनरोल नुहे करे तली ऑल आर रिक्वेस्टेड टू एनरोल इन आवर कोर्स बिकॉज़ दिस इज वेरी negligible price रे हमें आनी छो that is only at 999 rupees रे टोटल CPT botany 2025 रो कोर्स लॉन्च हे सारी छे हमर न्यूक्लियोटाइड एप्लीकेशन जेनो कि हमें पाई परमा 200 प्लस टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर पाई परमा इंपोर्टेंट लेक्चर माने अछि सब अथर हमें वीडियो लेक्चर पाई परमा तार संगे टॉपिक वाइज पीआईक्यू जेंडे कि हमें स्टार्ट करी सारी छु ऑलरेडी टॉपिक वाइज पीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें डिस्कशन करछो तार संगे संगे सही क्वेश्चन मनकर टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन तुमको मिली जाउ छे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल टेस्ट सीरीज अवेलेबल अछि एज वेल एज मॉक टेस्ट अवेलेबल अछि ओके तो आउ देरी नहीं करी हमें नेक्स्ट आज स्टार्ट करमा दैट इज योर सीपीटी 2025 रो लागि माइक्रोबायोलॉजी अंडर रे दिस इज योर सेशन नंबर 2 दुई नंबर सेशन माइक्रोबायोलॉजी रो फर्स्ट सेशन हमें खाली वायरस बाबत रे डिस्कशन करतना आज वायरस बैक्टीरिया दिजन को मिसेग्री किछरा क्वेश्चन डिस्कशन करमा लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ओके आज रो फर्स्ट क्वेश्चन हला द प्रोसेस बाय व्हिच ए वायरस transfer genetic material from one bacterium to another that is called as what that is discovered by dash okay कौन कहला the process by which a virus transfer the genetic material from one bacterium to another this is called as what that is called as transduction देखिए मैं कहना कहसो transduction बोली करी कहसो transduction ट्रांसडक्शन माने काना ट्रांसडक्शन माने काना जे हमर सपोज इटा गुटे बैक्टीरिया हला ई बैक्टीरिया के अटैक कला ई बैक्टीरिया के अटैक कला गुटे बैक्टीरियोफेज इतर भीतर नुवा नुवा बैक्टीरियोफेज जते बेले तयारी हला से बैक्टीरियोफेज रो भीतर की बोले जैसी सम डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया राइट ई बैक्टीरिया किछ डीएनए पले गला एंड ई व्हाइट टा जन अछि इटा हला हमर बैक्टीरियोफेज रो डीएनए राइट बैक्टीरियोफेज रो डीएनए संगे संगे बैक्टीरियोफेज रो काम कर दो देखो एटा हला बैक्टीरिया के की अटैक कला बैक्टीरियोफेज अटैक बैक्टीरियोफेज पाखे काना थिला तार डीएनए थिला तार संगे संगे हम जेतले देखु जो इन केस ऑफ योर डीएनए पाखे भी काना थिला सॉरी बैक्टीरिया पाखे भी काना थिला डीएनए थिला जेतले एंटर कला हमर इतर डीएनए टा इतर भीतर के जेतले एंटर कला इतर जन डीएनए अछि बैक्टीरिया रो डीएनए माने काना से फ्रैगमेंट हे जैसे ओके बैक्टीरिया रो डीएनए माने काना जैसे फ्रैगमेंटेड हे जैसे इटाला बैक्टीरिया रो डीएनए फ्रैगमेंटेड डीएनए एंड इतर भीतर के असला परे बैक्टीरियोफेज बहुत सारा बनस नॉन नॉन बैक्टीरियोफेज बनला ओके केंदकरी बनसे काना बनसे मैं डिटेल्स नहीं बताबा तो इतर भीतर बहुत सारा नॉन नॉन बैक्टीरियोफेज बनला संगे संगे इमनकर भीतर तकर निजर डीएनए अछि निजर डीएनए थिबार संगे संगे से तार पाखे आउ काना अछि किछि पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया रो डीएनए भी इमनकर भीतर के इनकॉर्पोरेट हो जाय ई बैक्टीरिया मानकर डीएनए रो किछि पार्ट इमनकर भीतर के काना से पले जाय राइट जिते बेले ई बैक्टीरिया रो तार ब्रस्टिंग हे जिवा ब्रस्टिंग हे गला परे काना हबा बैक्टीरिया फाटी गला परे इमान बाहर के बाहर आस राइट
इमाने जो बाहरी आसले बट इमानकर पाखे कहार डीएनए अच्छे ताकर निजर डीएनए संगे संगे ई बैक्टीरिया रो भी किछि डीएनए इमानकर पाखे अटैच बुझियला ई जते बेला आ गुटे बैक्टीरिया के अटैक कला दिस इज अनदर बैक्टीरिया ओके ई बैक्टीरिया भीतर के जतेले एंटर कला इतर काना एंटर कला इतर भी डीएनए इतर भीतर के एंटर इतर डीएनए जतेले एंटर कला ई डीएनए रे लागि छै नो कहार डीएनए ई बैक्टीरिया रो डीएनए किछि लागि छै तो गुटे बैक्टीरिया रो डीएनए टा ई बैक्टीरिया ने के ट्रांसफर हला बट टोटल डीएनए नाइ ट्रांसफर है सम पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरिया ट्रांसफर टू दिस योर बैक्टीरिया ए this is your bacteria B. Bacteria A raw small part of this DNA transferred to the bacteria B, but kahar dekri transfer hala that is through the bacteriophage. Bacteriophage, and that bacteriophage that is a what? That is a virus. Then virus ta bacteria ke attack करसे bacteriophage बोली की question last class में discussion है ना? ये method के काना को वजह से this method is called as transduction. मेथड के कहते ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसडक्शन किए डिस्कवर करथिले बोली कि ना ट्रांसडक्शन बुझी परलो जे गुटे बैक्टीरिया आ गुटे बैक्टीरिया ने के डीएनए ट्रांसफर होचे बट कहार देकरी ट्रांसफर होचे गुटे वायरस देकरी जदी ट्रांसफर हला ताके कहसो हमें काम बोली कि ट्रांसडक्शन बोली कि कहसो एंड दिस ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द प्रोसेस बाय व्हिच वायरस ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय योर जिंडर एंड लेडरबर्ग केन माने डिस्कवर करथिले जिंडर एंड लेडरबर्ग एके डिस्कवर कर माने रहला नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल वॉल कंपोनेंट that anchor the outer membrane of the gram negative bacteria to the peptidoglycan layer देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जितला देखमा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रे तार बाहर साइड रे गोटे थिसी लिपोपोलिसाकाराइड ओके काना थिसी लिपोपोलिसाकाराइड ओके तापरे गोटे स्पेस प्रेजेंट थिसी तापरे हमर काना रहला दिस वन दैट इज योर पेप्टाइडोग्लाइकन the peptidoglycan the cell wall component anchor the outer membrane of the gram negative bacteria to the peptidoglycan ro bahare ino can layer ache this one that is your lipopolysaccharide layer right lipid thisi ओके तार संगे प्रोटीन भी थिसी किछिटा तार संगे पॉलीसैकेराइड भी किछि थिसी तो लिपोपॉलीसैकेराइड कहि परबा लिपोप्रोटीन भी कहि परबा ओके सो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्राउन सते लगे ताके कहसे ब्राउन्स लिपोप्रोटीन तो इटा के अदरवाइज एलपीएस बोली करी कहसे ओके तो दैट इज इन केस ऑफ योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जेन माने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाबद रे किछि मोर आईडिया नबर के चाहू हमर कोर्स रे अवेलेबल अछि ई कोर्स रे का राइट हमर जदी हमें जिमा एंटर करमा तबले एंटर करछु कोर्स भीतर के एंटर कला परे सना लिखा हितबा लेक्चर्स इंपोर्टेंट लेक्चर्स माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी बोली गुटे पेपर्स थिबा से फोल्डर के एंटर करबा से फोल्डर के एंटर कला परे यू विल गेट द all the lectures related to bacteria okay तो बैक्टीरिया रे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखि देबो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रो आउटर कवरिंग रे प्रेजेंट से लिपोपॉलीसैकेराइड ओके मेसोसोम आर आल्सो नोन एज व्हाट मेसोसोम काना जे हमर बैक्टीरिया जते बेले देखुछु सपोज इटा बैक्टीरिया हला बैक्टीरिया रो सेल मेम्ब्रेन रे किछि जागा रे काना हितिसी इनफोल्डिंग हितिसी अरे इनफोल्डिंग मन को काना कहै जैसे मेसोसोम बोली करी इनफोल्डिंग मन को काना कहै जैसे मेसोसोम बोली करी कहै से एंड बिलीव करा जैसे जे दिस इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन मेसोसोम के काना कहै जैसे दिस इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन ओके बट हमें जदी हायर ऑर्गेनिज्म देखमा त बैक्टीरिया केसरे मेसोसोम इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन बट हायर ऑर्गेनिज्म जे देखमा रेस्पिरेशन रो साइट हिसाबे काहा के कंसीडर करसो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के कंसीडर करसो so that mesosome is also known as what that is also known as mitochondria but this is not the mitochondria but it a mitochondria no hai mitochondria hisabe में देखिए consider करी परमा why you can consider this because mesosome is the site of respiration in bacteria mesosome is the site of respiration in bacteria just like that in case of your eukaryotic cell in case of your higher organism which one act as the site of respiration that is your mitochondria
जेहेतु माइटोकॉन्ड्रिया भलिया काम करूचे लगे ताके कंसीडर करा जायसे माइटोकॉन्ड्रिया इज बट दिस इज नॉट द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी बिग थिंग्स एंड दैट इज ए न्यू और इटा के कहि बारमा न्यू फीचर्स एडवांस फीचर है फॉर द हायर ऑर्गेनिज्म बट हम बैक्टीरिया देखमा दैट इज वेरी ओल्ड प्रोकैरियोटिक माने बहुत ओल्ड ऑर्गेनिज्म है जेतेबेले पृथ्वीर पहला स्टार्टिंग हला अर्थ फॉर्मेशन बड इतरे स्टार्ट हला पहला पहला जेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होतिले से टाइम रे वन ऑफ द इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म जेंडा फॉर्मेशन होतला सेटा होचे हमर क्लियर दैट इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल अच्छा एटा मैं लास्ट क्लास रे भी डिस्कशन करते ना केनथि हमर होस्ट सेल रो डिस्ट्रक्शन हेसी केन मेथड रे दैट इज योर लाइटिक लाइफ साइकिल जदी होचे ओके तो सेन हमर बैक्टीरिया रो तार डिस्ट्रक्शन हेसी लाइटिक रे लाइसोजेनिक रे बैक्टीरिया रो डीएनए रे जाइकरी वायरस रो डीएनए टा इनकॉर्पोरेट हि आसी बैक्टीरिया जेतले मल्टीप्लाई हेसी तार संगे संगे वायरस रो भी मल्टीप्लाई हो है ना ये पढ़ी थिलो तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन hyperthermophiles are heat loving microbes that can live in the temperature optima above this hyperthermophiles देखो थर्मो माने कणा हीट जेन बैक्टीरिया माने दे आर हीट लविंग जिन जगह रे अधिका हीट थिबा से जगह रे ग्रो करूथे मान को कहसी हाइपर थर्मोफाइल्स जेने कि वन ऑफ द एग्जांपल जदी हमें जिमा दैट इज योर थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया जेने कि बायोटेक्नोलॉजी रो वन ऑफ द इंपोर्टेंट पीसीआर करबार लागि यूज करा जायसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जेते बेले हमें देखमा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट वाज गिवन बाय केरी मुलिस बिली गुटे बायोलॉजिस्ट सेटा के डेवलप करथि तो पीसीआर रे वन ऑफ द इंपोर्टेंट बैक्टीरिया रो तार डीएनए पॉलीमरेज यूज करा जैसे से बैक्टीरिया रो नाला थर्मस एक्वाटिकस जेंदे कि हॉट वाटर स्प्रिंग रे देखबार के मिलसी मोर देन पक्का पक्की 80 90 डिग्री सेल्सियस सन वाटर रे प्रेजेंट से जगह रे बैक्टीरिया देखबार के मिलसी एंड से बैक्टीरिया उटर एग्जांपल हला थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया तो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया क्या काने दैट इज योर हीट लविंग बैक्टीरिया राइट तो समान को कमा हाइपरथर्मोफाइल्स वाली कमान दे आर जनरली ग्रोइंग अबव द 80 डिग्री सेल्सियस ओके हाइपरथर्मोफाइल डर्मंट टॉप नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन देखो जेते बेला अनफेवरेबल कंडीशन आइसी बैक्टीरिया के यदि प्रॉपर्ली तार एनवायरनमेंट नाही मिलबार अनफेवरेबल कंडीशन अछि माने दैट कंडीशन इज नॉट गुड फॉर द बैक्टीरिया बैक्टीरिया के जदी किछि कंडीशन एंता मिलला जेन कंडीशन रे बैक्टीरिया रो ग्रोथ ता बहुत प्रॉब्लम हेबा जदी से ग्रो करि नाही पारे ताके शॉर्टेज हे जिबा फूड रो स्कैरसिटी हे जिबा राइट हाई टेम्परेचर हे गला से केस से बैक्टीरिया काना करसी तार बॉडी भीतर एक स्ट्रक्चर तयारी करसी ताके तो समय एंडोस्पोर बोली करी कहस जेतेले बहुत खराब कंडीशन थे एनवायरनमेंट रे से टाइम रे बैक्टीरिया काना करसी तार गोटे एंडोस्पोर फॉर्मेशन करसी जेंडा की फेवरेबल कंडीशन आबार तक से वेट करती से फेवरेबल कंडीशन आसला परे फिर से नॉर्मल कंडीशन आसी बुझियला तो से स्ट्रक्चर के कहसी काम बोली करी एंडोस्पोर बोली करी कहसी जदी हमर क्या कंडीशन थिबा डर्मान कंडीशन टॉप डर्मान इति लाई कहला जैसे टाइम में इनएक्टिव रहे ओके टॉप कंडीशन ताके ग्रो करबार लगे बहुत टॉप सिचुएशन है जेतिसी बहुत खराब कंडीशन थेसी बट दैट इज नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन भी करी नाही पारुथे ओके बैक्टीरिया कैंसर लगी टू टाइट ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन रे बहुत सी बार लगे तो गोटे स्ट्रक्चर तयारी करछि ताकि हमें कहसो एंडोस्पोर बोली करी तबरे असला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक देन द ग्राम देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यदि हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के यदि एंटीबायोटिक दमा इता के यदि एंटीबायोटिक दमा इजीली एंटीबायोटिक काम दे दबा इता के डिस्ट्रॉय बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के यदि हमें एंटीबायोटिक दमा सहज एंटीबायोटिक काम नहीं दे ओके कैन ग्रो अगेंस्ट द एंटीबायोटिक कैन माने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जनरली ग्रो अगेंस्ट द एंटीबायोटिक दैट मींस दे आर मोर रेजिस्टेंट कहार अगेंस्ट रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रो अगेंस्ट कैन माने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया माने एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव राइट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आर बट मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैन माने ग्राम नेगेटिव क्या है जी
because gram positive bacteria outer covering टा peptidoglycan है cell wall टा but हमें gram negative bacteria जो देखमा बाहर रे काना जैसे लिपोपोलिसाकाराइड जैसे जे कि मोस्टली एंटीबायोटिक मन को ट्रैप कर देसे से अलाउ नहीं करे राइट so that lipopolysaccharide outer lipopolysaccharide layer actually ताके प्रोटेक्ट कर देसी gram negative bacteria but lipopolysaccharide layer that is not found in case of the gram positive bacteria. Additional good extra layer আছে কাহার পাখে that is in case of your gram negative bacteria and that additional layer that is your lipopolysaccharide layer and that lipopolysaccharide layer of the bacteria that protects the bacteria from the antibiotic. But this extra layer that is not found in case of your gram positive bacteria so that generally they are less resistant to antibiotic. Okay. Next question. The smallest known virus देखो इमानकर भितरु जे देखमा one of the smallest virus हिसाब से consider करमा this one that is a tobacco necrosis satellite virus एटा के कहसन that is the smallest virus the necessary free energy for flagellar rotation in case of a bacteria derived from this देखो जेतेला में बैक्टीरिया देखु छु बैक्टीरिया इटा हला एंड इटा हला तर फ्लाजेला फ्लाजेला काने करसे रोटेशन करसे तो फ्लाजेला के रोटेशन करबार लगे ताके एनर्जी फ्री एनर्जी मिलसी केनता करी से टाइम रे हमर काने से देयर विल बी प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा प्रोटॉन ग्रेडियंट माने काना भितरे हमर प्रोटॉन रो काना हबा कम बेसी हबा ओके प्रोटॉन रो काना हबा ग्रेडियंट माने डिफरेंस हबा प्रोटॉन रो डिफरेंस हबा एंड सेनु जेन एनर्जी डिराइव हबा सेटा के यूज करते फ्लाजेला के मूवमेंट करबार ले राइट ताके कोइ समय काम ने प्रोटोमोटिव फोर्स बोली के भी कोई पारबा राइट तो प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स इन द रोटेशन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लाजेला तो हम समझते हैं एनर्जी के देखि करी मोस्टली एटीपी बोली लिखि दे नॉट द एटीपी से टाइम रे प्रोटॉन रो ग्रेडियंट रो लगी बोली करी एनर्जी डिराइव हेसी एंड सेटा के यूज करी करी फ्लाजेला रो कानेसी रोटेशनल मूवमेंट हेसी एंड आके बड़ी बड़ी चल ये दैट इज योर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन the organism that derive energy from chemical oxidation and use inorganic carbon as the carbon source देखो से काना के यूज करसे कार्बन के यूज करसे माने कार्बन डाइऑक्साइड यूज करसे ओके एनर्जी केनो पैसे केमिकल के ऑक्सीडेशन करी करी एनर्जी पाइस और सता के यूज करी करी से काना करसे फूड तैयारी करसे बेले ताके को हम काम बोली के केमो ऑटोट्रॉफ्स बोली करी कहम केमिकल यूज करू राइट एंड निजरटा निजे कार्बन के यूज करी निजर फूड निजे सिंथेसाइज करि पारुछे ताके कहस हमें केमो ऑटोट्रॉफ्स बोली यदि निजरटा निजे तैयारी नै करि परतता बट केमिकल यूज करता केमो हेटेरोट्रॉफ्स बोली ओके निजरटा निजे तैयारी करि नै परतता बट से लाइट एनर्जी के भी रिसीव करतता फोटो हेटेरोट्रॉफ्स बोली कहतो लाइट एनर्जी के यूज करथिता और निजरटा निजे तैयारी करथिता तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोली कहथिता बट सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म that derive the energy from the chemical रो आनला तो केमो वर्ड यूज करला यूज इनऑर्गेनिक कार्बन एज द कार्बन सोर्स कार्बन के यूज करू छे माने का फोटोसिंथेसिस करू छे बिकॉज़ फोटोसिंथेसिस से कार्बन रो यूटिलाइजेशन है ना तो एटा के हम केमो ऑटोट्रॉफ्स बोली के का microorganisms that are capable of growth and reproduction in low temperature ranging from -20 degree to 10 degree celsius जिन microorganism मनकर कैपेसिटी अछि दे कैन ग्रो at very less temperature बहुत कम टेम्परेचर रे जदी ग्रो कले समान को हमें काना का समान को कहमा में कामली के देखो बहुत सारा मेसोफाइल्स थर्मोफाइल्स सैकेरोफाइल्स बारोफाइल्स राइट जिन माने मीडियम रेंज रो टेम्परेचर रे ग्रो करसन समान को मेसोफाइल्स बोली के कहमा ओके जिन माने मीडियम रेंज रे ग्रो करसन टेम्परेचर रे समान को मेसोफाइल मेसो माने मीडियम थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर जन माने ग्रो करसन थर्मोफाइल्स very less temperature region माने ग्रो करसन साइक्रोफाइल्स ओके very less temperature ओके very high temperature ओके एवरेज temperature and barophiles high pressure रे ग्रो करबे
हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिन जगह थिबा से जगह जदी ग्रो करथबे समान को क्वेश्चन 12 तेना काना कहिचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लो टेम्परेचर माने केनटा दैट विल बी योर माइक्रोफाइल आंसर बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is an archibacteria मानकर भितरो archibacteria केनटा archibacteria मान that is the most primitive bacteria जे देखमा most primitive bacteria सब हमें ना consider करमा that is your green sulfur bacteria consider okay next RNA particle without protein sheath RNA ଅଛି but protein रो covering नै न ताकि हमें काना कहसु thyroid बोली करी कहसु खाली RNA ଅଛି protein নাই न okay and that are infectious in nature they can cause disease जैसे कि potato spindle disease कहउतला काली का डिस्कशन करूतला that is your thyroid which one of the following is a bacterial disease मानकर भितरो केनटा bacterial disease है बोली ओके इटा माने टिके टॉप क्वेश्चन है तुमर लागि बिकॉज़ हमको बहुत सारा डिजीज मानकर बाबद रे जानवर के पड़बा जदि सब डिजीज बाबद रे टिके आईडिया नाही छवा तो ई क्वेश्चन माने करी तो मैं कहि दउ छ एंता टाइप रो नाम माने आइस्तिले तुमे जानि पकाबो बट फास्ट इतरो बहुत थर क्वेश्चन आइछि साइट्रस कैंकर दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साइट्रस कैंकर गोटे साइट्रस लेंबू रे गोटे कैंसर टाइप रो स्ट्रक्चर क्रिएट करसी बैक्टीरिया सेते लेके ताके कहसी साइट्रस कैंकर दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बट पपाया केसर लीफ कर्ल डिजीज अछि दैट इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दिस इज कॉज्ड बाय वायरस टमाटो फॉर्न लीफ टमाटो रो लीफ टॉप फॉर्न भली आई जैसी मुड़ी ही जैसी okay that is also not caused by bacteria that is also caused by citrus Pistaza disease this is also not caused by bacteria this is also caused by so citrus canker से सुरक्षित हो citrus canker that is a bacteria right it is our bacterial disease lipopolysaccharide in the cell wall is the characteristics of which of the following microorganism lipopolysaccharide can gram positive na gram negative रहती है बार बार आज डिस्कशन करी साला ना this one found in case of gram negative bacteria lipopolysaccharide outer covering रे present which one of the following is not a cyanobacteria मनकर भितर cyanobacteria contain है cyanobacteria माने काना these are your blue green algae yellow हरित वाला बोली कि क्वेश्चन ओडी cyanobacteria generally these are prokaryotic in nature cyanobacteria माने prokaryotic nature and they have some characteristics related to algae किछि कैरेक्टर समानकर algae संगे समान अछि एंड किछि कैरेक्टर समानकर कार संगे समान अछि बैक्टीरिया संगे समान अछि सेते लगी ब्लू ग्रीन algae बोली कि भी कहस बड़ी मनकर पाखे पिगमेंट से सियानोफाइसिन ओके सेते लगी ताके सियानोफाइसिन अंडर रखिछो तो नष्टक हला अनाबेना हला ओके नष्टक गोटे सियानोबैक्टीरिया स्पिरुलिना गोटे सियानोबैक्टीरिया अनाबेना गोटे सियानोबैक्टीरिया बट जिग्नेमा दैट इज नॉट द okay so that in answer about which one of the following is not a cyanobacteria which one is not a cyanobacteria that is your jignema बुझियला next question the tobacco mosaic virus is approximately dash in size tobacco mosaic virus रो size केते अछि हमें जेते क्लास करथना ए टाइम रे डिस्कशन करिथिना जे तार लेंथ तार विड्थ रहसी 180 एंगस्ट्रॉम ओके तार विड्थ रहसी 180 एंगस्ट्रॉम और तार लेंथ रहसी 3000 एंगस्ट्रॉम बट इन एंगस्ट्रॉम रे ना मागी तुमको मागी छे केते रे नैनोमीटर रे मागी छे पहले नैनोमीटर रे मागले हमें काना करमा डिवाइडेड बाय 10 कर ले केते हला 18 नैनोमीटर तार विड्थ हला ओके 3000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर the length about 300 nanometer or the width about 18 nanometer 300 into 18 nanometer this is the size of the tobacco mosaic virus okay next question which one of the following can be called as provirus मित्र में कहा के प्रोवायरस को लेके देखो प्रोवायरस और प्रोफेज लास्ट क्लास में डिस्कशन करो ना जे प्रोफेज कहा के क्वेश्चन जब और बैक्टीरिया रो डीएनए के आसी करी यदि भाइरस रो डीएनए इनकॉर्पोरेट हे गला भाइरस रो डीएनए टा आसला एतर भीतर के भाइरस रो डीएनए यदि इनकॉर्पोरेट हे गला एता के क्वेश्चन में प्रोफेज
ओके एटा भाइरस रो डीएनए आ एटा बैक्टीरिया रो डीएनए प्रोफेज बोली कि कहतला प्रोफेज को अदरवाइज कहै छै प्रो भाइरस ओके एटा केन लाइफ साइकिल रे देखबार के मिलसी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल रे कंडीशन ओके तो एटा ये काना कहमा दैट इज योर इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम दिस वन दैट इज योर वायरल जीनोम जीनोम माने जेनेटिक मटेरियल के कहू जीनोम बोली कि तो वायरल जीनोम इज इनकॉर्पोरेट विथ द बैक्टीरियल डीएनए so that integrated viral genome कहि परमा integrated माने मिसी करी अछि कार संगे बैक्टीरियल डीएनए संगे भाइरस रो डीएनए टा मिसी करी अछि दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम ओके तो एटा हमर प्रो भाइरस प्रोफेज जहां क्वेश्चन आइतबा से सब तुमको आंसर देबार छै नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रोमोसोम ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरिया ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର କ୍ରୋମୋଜୋମ ତ ଜେନେରାଲି ନାଇଁ ଥାଏ ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ବୋଲିକିରି ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେସି ତାକେ ରାଇଟ୍ ତ ଆମର ଇତାର ପାଖେ ଯେନ୍ ଡିଏନଏ ଅଛି ଏଟାକେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରବା ବିକଜ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ आर नथिंग बट दैट आर मेड अप ऑफ डीएनए व्हेन डीएनए अंडरगोस रिपीटेड कॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग इट मेक द क्रोमोजोम है ना तो इतर पाखे जेन क्रोमोजोम अछि और डीएनए जेन अछि दैट इज व्हाट दैट इज सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओके सर्कुलर गोल हेकरी अछि एंड केतेटा स्ट्रैंड अछि दुईटा स्ट्रैंड अछि मात्र भीतर कैम्बन फॉर्मेशन हाइड्रोजन बुझियला नेक्स्ट ला which of the following is a process in bacteria to withstand the unfavorable condition या गुरु डिस्कशन करिथन unfavorable condition आसले बैक्टीरिया काना करस ओके कैन प्रोसेस करस दैट इज योर एंडोस्पोर फॉर्मेशन स्पेशल स्ट्रक्चर जे कि बैक्टीरिया के बचा से फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन हार्ड कोट फॉर्मेशन ऐसी रिपीटेड कवरिंग फॉर्मेशन ऐसी बैकग्राउंड नेक्स्ट क्वेश्चन when a phase DNA is incorporated into the bacterial genome that constitute and the constitute is known as this क्या करू डिस्कशन करतला दैट इज योर प्रोफेज यदि फेज डीएनए बैक्टीरियोफेज रो डीएनए इनकॉर्पोरेट होला बैक्टीरियल रो जीनोम रे तले ताके हमें काना प्रोफेज प्रोवायरस okay transduction is a mode of genetic recombination is there transduction पूरा फास्ट क्वेश्चन ट्रांसडक्शन माने काना जे गुटे बैक्टीरिया नो आ गुटे बैक्टीरिया निके डीएनए रो ट्रांसफर हबा थ्रू द वायरस ताके कोस ट्रांसडक्शन तो ट्रांसडक्शन इज ए मोड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहार केस बैक्टीरियन ग्रीन algae नहीं ग्रीन algae रे देखबार के नहीं बैक्टीरिया रे देखबार के मिलसी बैक्टीरियन फंजाई रे क्या नहीं फंजाई रे देखबार के नहीं मिले कैनोबैक्टीरिया और ग्रीन algae नहीं मन करनो देखबार के मिलसी दैट इज ओनली बैक्टीरिया ओके बुझी पारलो ट्रांसडक्शन टा केनो देखबार के मिलसी ओनली दिस इज इन केस ऑफ योर बैक्टीरिया when the DNA of a phage is transmitted to the host there is temporary period of disappearance of the infectivity such period is known as देखो जते बेले हमर बैक्टीरियोफेज रु बैक्टीरिया भीतर के डीएनए गला इतर डीएनए जते बेले इतर भीतर आसला ओके आसला परी ए डीएनए काना करसी पहला ए बैक्टीरिया के हाइजैक करसी बैक्टीरिया सब फंक्शन के से हाइजैक कर देसे बैक्टीरिया के तार कैसे फंक्शन करी नहीं दिए से बेल भीतर किछि हमें जानि नै पारो बैक्टीरिया काना होसे न होसे नहीं से बेल भीतर ई तार काना कर देसे बहुत सारा डीएनए रेप्लिकेट करी बहुत सारा डीएनए बट जना नहीं पड़े एते बेल तक से प्रिपेयर करछला राइट नुआ नुआ बैक्टीरियोफेज नुहे तयारी होइते टेम्पोररी पीरियड रो लागि किछि इन्फेक्शन जना नहीं पड़े बैक्टीरिया रो डीएनए भीतर के और से पीरियड के कुआ जैसे एक्लिप्स पीरियड बोली कि कुआ जैसे काना कुआ जैसे एक्लिप्स पीरियड बोली कि कुआ जैसे बुझेला उभी जाइते किछि टाइम रो लागि क्लियर इन्फेक्शन किछि जना नहीं पड़े ताके कोन समय क्या पीरियड एक्लिप्स पीरियड बोली कि कहै तो रखितेनु क्वेश्चन आसी इटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर two bacteria found to be very useful in genetic engineering experiments किन बैक्टीरिया के जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट यूज कराय सो दिस इज द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ योर बैक्टीरिया बैक्टीरिया इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रे हमें जे देखमा किछरा बैक्टीरिया के हमें बायोटेक्नोलॉजी रे यूज करथो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज
then देखिए one of the example that is your Escherichia coli and Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium tumefaciens के यूज करा जायछि ताके कहै छै नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. देखिए काना कहै छै नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोली करी कहा जायछि. बिकॉज ये नेचुरली काना करि परसी तार डीएनए के अलगा सेल मान कर निके प्लांट सेल मान कर निके and it has the capacity to cause some kind of disease. Crown gall disease बोली करी कहा जायछि. ये प्लांट रे काना करसी क्राउन गॉल डिजीज करसी. ओके एंड तार पाखे गुटे स्पेशल टाइप रो प्लाज्मिड थिसी जाके कहसी टीआई प्लाज्मिड बोली करी कहा. स्पेशल टाइप रो प्लाज्मिड that is TI plasmid, tumor inducing plasmid. तार पाखे ट्यूमर फॉर्मेशन करावार गोटे जीन अछि. ओके एंड से जीन के क्वेश्चन टीडीएनए बोली करी क्वेश्चन. तो टीडीएनए के काना करते बैक्टीरिया रो भीतर के ट्रांसफर करसे एंड बायोलॉजिस्ट माने काना कले बायोलॉजिस्ट माने से टीडीएनए रीजन रे जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कले. हमको कैंसी भी जीन दरकार गोटे प्लांट रे बेला हमें काना करमा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन रो त टीडीएनए रीजन रे पुट कर दमा से स्पेसिफिक जीन के एंड से तके जदी टारगेट कला प्लांट सेल भीतर के ट्रांसफर कर हमको किसी करबार के नहीं पड़े जस्ट खाली हमको तार टीडीएनए रीजन रे हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट कर दबार. Right, that is your agrobacterium tumefaciens. So that this is the important bacteria that is used in the genetic engineering. And Escherichia coli बहुत सता के generally use करा जासी हमर कैंसर that is for your host हिसाब यूज करा जासी जेंता कि हमें सुनितमा समस्त इंसुलिन रो जीन के ह्यूमन रू बाहर करा गला बीटा सेल जेंटा कि हमर पानक्रियास रे प्रेजेंट अछि सेनो बीटा सेल रू बाहर करा गला ह्यूमन रो इंसुलिन जीन के एंड से इंसुलिन रो जीन के पुट करा गला केनो दैट इज इनसाइड द इकोलाई बैक्टीरिया एंड यहाँ दे हमर इंसुलिन के प्रोडक्शन करूचे Escherichia coli प्रोडक्शन करूचे एंड से Escherichia coli रू इंसुलिन के एक्सट्रैक्ट करी करी स्टोर करी करी रखा है से ताकि हमें डायबिटीज रो ट्रीटमेंट रो लागि यूज करू. जानि छ हमें इंसुलिन टाके कहसो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोली करी कहसो जदी हमर बॉडी रे ब्लड रे जदी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलिन जदी लो ही गेला कम ही गेला तले हमर सब सेल मान को ग्लूकोज और ट्रांसपोर्ट हेने पारे सेल भीतर के जदी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं पारला नथिंग इज बुझी पारलो. तो एनीवे Escherichia coli के होस्ट हिसाब यूज करे से एंड वन ऑफ द इंपोर्टेंट प्लाज्मिड Escherichia coli रे भी बाहर करा जाय छै जिन थ्रू क्वेश्चन बहुत बार असलानो बायोटेक्नोलॉजी दैट इज इको आर1. Escherichia coli बैक्टीरिया रो गुटे प्लाज्मिड गुटे स्पेशल टाइप रो प्लाज्मिड बाहर करा जाय छै दैट इज योर इको आर1 बोली करी कहसो दैट इको आर1 sorry sir that is your not that is your restriction endonuclease enzyme. The restriction endonuclease enzyme रो ना हला काना that is your eco r1 Escherichia coli रो rw13 strand रो बाहर करा हिचे गोटे restriction endonuclease enzyme and that restriction endonuclease enzyme कैंसर ले हेल्प करसे गोटे स्पेसिफिक जीन के कट करबा लिए. राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करमा क्वेश्चन नंबर 25. Mycoplasma differ from bacteria in not possessing the dash. Mycoplasma गोटे बैक्टीरिया है बट बैक्टीरिया रो केन कैरेक्टर से डिफरेंट. बैक्टीरिया रो समस्तंकर बैक्टीरिया पखे आउटर कवरिंग रे सेल वॉल प्रेजेंट है बट वन ऑफ द इंपोर्टेंट बैक्टीरिया जार पखे सेल वॉल नाइट है तर आउटर मोस्ट कवरिंग होचे दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन. इते के जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बोली करी भी कोइ सिका के दैट इज योर माइकोप्लाज्मा के एंड माइकोप्लाज्मा रे काना नाइट है सेल वॉल नाइट नॉट पोजेसिंग. ओके वॉललेस बैक्टीरिया बोली करी कोइ परबा ताके माइकोप्लाज्मा के जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी ये दैट इज योर माइकोप्लाज्मा. तर आउटर कवरिंग काना है सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन द हेलिकल सिमेट्री ऑफ द कैप्सिड इज सीन इन दिस. हेलिकल सिमेट्री माने काना जेना में टोबाको मोजाइक भाइरस देखुमा टोबाको मोजाइक भाइरस रे हेलिक्स रे तार अराउंड रे काना थी हेलिक्स रो अराउंड आरएनए टा हेलिकली कॉइल्ड थी ताके हेलिक्स कोना तार अराउंड रे हमर काना थी प्रोटीन रो कैप्सोमियर माने प्रेजेंट एटा के कहला हेलिकल सिमेट्री केनो देखबार के मिलसे टोबाको मोजाइक भाइरस रे देखबार के मिल टोबाको मोजाइक टीएमवी. द नॉन एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ई भितरु केनटा एंडोस्पोर फॉर्मेशन करी नाही पारे ये फॉर्मेशन करी नहीं पारे दैट इज योर एक्टिनो. ओके
एक्टिनोमाइसिस माने एंडोस्पोर फॉर्मेशन करी नै परन बाकी माने फॉर्मेशन viruses that infectious agent are dash viruses माने काना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट प्रोटीन ओके तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अच्छा देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल आ किछि नै राइट viruses when spherical bacteria are arranged in irregular bunches they are termed as देखो spherical bacteria this one there is a spherical bacteria गोल बैक्टीरिया के कहसो spherical bacteria और इमान को कहसी कोकस इमान को क्या बैक्टीरिया कहसी कोकस यदि स्फेरिकल बैक्टीरिया दुई दुईटा ही करी थिबे ताके कहसो हमें डिप्लोकोकस ओके एतर फुल लेक्चर अवेलेबल अछि हमर माइक्रोबायोलॉजी फोल्डर रे ओके जदि हमर चेन हिसाबे जॉइंट हेतिबे ओके चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया काना कहसो ताके हमें स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस राइट जदि हमर माने गोटे मास गोटे बंच ओके गोटे ग्रुप नॉर्मल थिबे एंता एटा के कहसो स्टेफाइलोकोकस ओके जदि हमर माने क्यूबोइडल शेप हितिबे क्यूब भलिया थिबे अरेंज थिबे क्यूब मोर मैथमेटिक्स रे हमें यूज करथमो मैथमेटिक्स रे क्यूब यूज करथमो यदि क्यूबोइडल शेप थिबा ताके काना कहसो हमें ताके कहसो हमें सर्सिनी ओके तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट अरेंजमेंट होउचे बैक्टीरिया मानकर तो डिफरेंट अरेंजमेंट हिसाब से को ना देचे व्हेन द स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन इरेगुलर बंचेस इरेगुलरली गुटे बंच हिसाब से रेगुलरली देखो बाकी समस्त रेगुलरली सही जन दुई दुईटा थिबे गुटे चेन रे थिबे माने क्यूब भलिया थिबे बट माने किछि वे रे सजे हे नै केनसे भी वे रे माने इरेगुलरली माने गुटे मास हिसाब गैदरिंग मान को कहसो हम स्टेफाइलोकोकस बुझी पारलो देखो मैं स्टेफाइलोकोकस काना जे बताबर लगी बाकी सब बते देली तो जेंतरु पे क्वेश्चन असला में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टी फेज और बैक्टीरियोफेज इज प्रोटीनासियस एंड कंट्रैक्टाइल देखो हमें जते बेले बैक्टीरियोफेज देखु छु एटा ला तार हेड एटा ला तार कोलर ओके एटा बेसल प्लेट एटा टेल फाइबर हला एटा टेल कहू छु एंड टेल रो अराउंड रे काना थिसी गोटे प्रोटीन रो स्प्रिंग भलिया गोटे स्ट्रक्चर थिसी जाके कहू हमें कंट्रैक्टाइल शीथ जे कि कंट्रैक्ट करि परस राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टी फेज इज प्रोटीनासियस एटा प्रोटीन द्वारा बनी छे एंड कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्ट हे परस स्प्रिंग भलिया अप डाउन हे परस राइट सेटा होचे दैट इज द शीथ सराउंडिंग द टेल oh no शीथ सराउंडिंग द टेल ओके एटा फाइबर नो है शीथ सराउंडिंग द टेल टेल के जेन शीथ टा सराउंड करते से ताके कहसो कंट्रैक्टाइल शीथ जाके कहसो कंट्रैक्टाइल बुझियला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन the capsomere of tobacco mosaic virus are arranged around the nucleic acid okay in dash bulge subscript are row spirally capsomere of the tobacco mosaic virus okay arrange around the nucleic acid can this one is your nucleic acid rna ta ribonucleic acid rna रे around रे तार जन capsomere माने আছে केनता हिसाब माने arrange spirally के स्प्रिंग भलिया arrange है जन ना spirally coiled है जन तो spirally आंसर है ओके तो एटा गला हमर कणा दैट इज अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी टोटल सरला हमर माइक्रोबायोलॉजी रो ऑल ऑफ द पीवाईक्यू जहां भी पीवाईक्यू थिला माइक्रोबायोलॉजी रो सब कंप्लीट राइट नेक्स्ट क्लास रे मैं स्टार्ट करमा सेल बायोलॉजी रो किछटा क्वेश्चन सेल बायोलॉजी आगुरु काना काना क्वेश्चन आनी थिला सेल बायोलॉजी रो सीपीटी हला के एसएसबी रिलेटेड जहां भी एग्जाम हला देखो एसएसबी बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करस after PG तुमको यदि SSB दबार है दैट SSB एग्जाम also conducted by
एसएसबी, ओके, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। तो एसएसबी जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन आंसी मोस्टली ट्रेडिशनल क्वेश्चन आंसी हमर जेनेटिक्स हला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हला हेतकी क्वेश्चन फ्लो नहीं करे जनरली, बट इतर करी भी पारे हमको सब कुछ करवा के पड़ो, है ना। तो मोस्टली ट्रेडिशनली जदि जिमा मोस्टली क्वेश्चन आसी अलजी रो आसी, माइक्रोबायोलॉजी रो आसी, तापरे फंजाई रो आसी, हमर टेरिडोफाइट्स रो आसी, जिम्नोस्पर्म रो आसी, एंजियोस्पर्म रो आसी, मॉर्फोलॉजी रो आसी, सिस्टमैटिक्स रो आसी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन अधा क्वेश्चन तो मेहनु खाली पाई। सेल बायोलॉजी रो गुटे दुटा क्वेश्चन आसी, जेनेटिक्स रो गुटे क्वेश्चन पाखा पाखे आसी, गुटे रो मैक्सिमम दुटा क्वेश्चन आसी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो बेसिक क्वेश्चन आसी, बायोटेक्नोलॉजी रो तो जनरली नहीं आसी अधा क्वेश्चन हां वहां आसला, राइट। तो जहां भी अछि मैं एनालिसिस करी सारी छै केन टाइप रो क्वेश्चन है, केन टाइप रो क्वेश्चन थिला आगरो, केन टाइप रो क्वेश्चन आसी पारवा बोली हम एक्सपेक्ट करू छु, केनते कि हम क्वालिफाई करि पारमा, सेतिर लगी न्यूक्लियोटाइड सब बोले तमर लगी तमर पछरे लगी, ओके। तो शेयर करो समस्त को जे हमर सीपीटी बोटनी रो लगी टारगेट सीपीटी बोटनी 2025 बोली हमर गुटे कोर्स लॉन्च है सारी से न्यूक्लियोटाइड एप्लीकेशन रे समस्त को शेयर करो सो दैट एवरीवन ई जिनिसटा के बेनिफिट नहीं पारन एंड आराम से इजीली जाई करे सीपीटी एंट्रेंस माने अटेंड करू, ओके। एंड आमे जेन यूनिवर्सिटी रे बे चाहमा से यूनिवर्सिटी रे तापरे आमे आराम से निजर एडमिशन करे परमा जदी हमर पाके, राइट। तुम जेन भी चाहूतबो तुमर निजर लोकालिटी रे चाहूछ और केनसी जगह के बड़ यूनिवर्सिटी के जाकर भी पढ़मे बोलछ जेंति कि उत्कल यूनिवर्सिटी हला, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी हला, संबलपुर यूनिवर्सिटी हला, जीएम यूनिवर्सिटी हला, ओके। सो दीज आर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी हला, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी हला, ई सब यूनिवर्सिटी माने दैट इज द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जेनटा कि मोस्टली जेन अधिक कटअप जाए, सबुठ हाईएस्ट कटअप उत्कल, संबलपुर यूनिवर्सिटी, ब्रह्मपुर एंड योर रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रे जासी, जीएम रे भी लेवल रो जाउछ। तो हमको भल मार्क आनबार अछि, पहले हमको भल से प्रिपरेशन हबार के पड़ो, भल हिसाबे भल वे रे जदी जाउछु आराम से क्रैक करि परमा, डेली जहां हमर क्वेश्चन आसुचे तुमे हेतकी प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली विल क्रैक दैट सीपी, ओके। लास्ट ईयर मन को तो हमर मिसुथुला केनटा हमर कैरियर मार्क मिसुथुला, आई थिंक ईयर रे कैरियर मार्क नाइ मिसम ए सतर बाबद रे डिटेल हमर डिसीजन कर देबी नेक्स्ट किछटा दिन ता पर आना एक्चुअली करबा केनता करी तुमर मार्क काउंट हबा डिसीजन करबा सतर करेक्ट, ओके। तो थैंक यू आज लगे एतकी थाउ, नेक्स्ट हमें डिस्कशन करमा फ्रॉम द सेल बायोलॉजी तक जहां भी क्वेश्चन पीआईक्यू अच्छे एतकी भी क्वेश्चन आसी पारबो बोली के हम भाबु छु, थैंक यू।